Good evening, everyone. I welcome you to the public forum on We Can Eliminate Cervical Cancer, a public awareness initiative of Indian Society of Colposcopy and Cervical Pathology, ISCCP, and Sant Parmanand Hospital, supported by RWA M2K, Victoria Garden, and Civil Lines. On behalf of Jacksonville Pharmaceuticals Limited, makers of immune booster Lycored to prevent cancer, as Lycored has anti-oncogenic properties, Doxipal DRL, and cramp of tablets for relief from leg cramps. I'm Dr. Vipin Tyagi, along with my teammates, Dr. Deepika Chabra and Mr. Amit Saxena. We feel honored to have as chief guest Dr. Shekhar Agarwal. He is a renowned orthopedic surgeon known for hip and knee replacement surgery. He is the executive director and chief surgeon at Sant Parmanand Hospital. He is recipient of various prestigious awards. He is well recognized for his service to humanity. He has more than 50 national and international research publications, as well as 2 book chapters to his credit. I will now request Sir to kindly inaugurate the session. Thank you very much for having me amongst you. I'm extremely delighted to be a part of this very important webinar on cervical cancer. It's a great initiative taken by the Indian Society of Colposcopy and Cervical Pathology. And I'm extremely happy that our own consultant, Dr. Sweta Balani, is very, very active in this society, promoting the cause and prevention of this cancer. We all agree that cervical cancer is the second most common cancer in women, only second to breast cancer. And the best thing is that in today's scenario, and to eliminate this menace, it's important that the general public at large should be made aware of and informed so that they come early for detection of cancer, because we know that early detection is the only way to prevent this cancer from spreading. So they can come early for pap smear or regular pap smear, and they need to be informed because doctors and the patients are partners in this to treat this menace of cancer. Apart from this, I believe that there is also a vaccine available, which we at Sant Parmanand Hospital and along with my own foundation, Dr. Shekhar Agarwal Foundation, we have been vaccinating almost, we have done about 500 nurses and nursing students and some children from the weaker sections of the society, done at free of cost from our end. But I think vaccination is a very Herculean task. We cannot reach the masses as such. And I think early detection by examination and perhaps the only way out. So I wish the panelists, the organizers, all success in this meeting. And it should be a great initiative and it should benefit the population at large. Thank you for having me in this meeting. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind words. Now I would like to welcome Dr. Sweta Balani, Secretary ISCCP 2018-21, Senior Consultant Obs Gyn, Sant Parmanand Hospital, Delhi. She has a special interest in preventive oncology endoscopic surgeries. She is convener for this webinar. Dr. Neerja Bhatla, Professor and Unit Head Department of Obs Gyn, AIIMS, New Delhi, Secretary General IFCPC, Council Member Asian Society of Gynae Oncology. She has authored over 250 articles in national and international journals, over 60 book chapters, recipient of several Oration UICC ICRETT Fellowship, IGCS Awards, etc. Dr. Nirmala Agarwal, Chairperson RCOG North Zone, Head of Department Obs Gynae, Sant Parmanand Hospital, Delhi. And she has a special interest in acquired infection, immunology of pregnancy, recurrent spontaneous abortion, and IVF failures. She authored over 145 articles in national and international journals. Dr. Saritha, Shamsunder, Senior Specialist and Professor, VMMC and Safdarjung Hospital, New Delhi. President ISCCP 2018-21, Organizing Chairperson IFCPC 2021, World Congress of Colposcopy and Cervical Pathology. She has authored 3 books, 10 chapters, and over 50 articles in national and international journals. Welcome to the moderator for today's webinar, Ms. Geetika Jain. She is the owner of the fashion house Begum Wazir and an ardent environmentalist. Besides designing,
She runs her own YouTube channel, Dump It Right, to spread awareness about correct waste segregation. She has been a speaker on the same subject at various events. Besides doctors, for today's public forum, we have women of all age groups as attendees. A warm welcome to all. Kindly note this session will be streaming on Facebook Live and the recording will be available on our YouTube channel for reference and knowledge sharing. I will now request Mrs. Geetika Jain to kindly begin the proceedings. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Vipin. I would once again like to welcome all the elite panelists. I think I'll just we've had a good session of introduction. I'll now straight move to the questions. First of all, we'd like to get in Dr. Neerja Bhatla. Ma'am, first we would need an introduction for everybody here. What is cervical cancer and why are we talking about its elimination globally and in India? And just for the benefit of larger audience, I think I would repeat the question in Hindi also. सर्वाइकल कैंसर क्या है और हम क्यों इसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं इसको हटाने के लिए वैश्विक स्तर पर और भारत के अंदर. Thank you, Geetika, for asking this very important question and thank you to the organizers for this program today. ये बहुत ही आज की तारीख में एक बहुत ही important program है और वो इसलिए कि अब ये ही एक कैंसर है जिस पे सारी दुनिया की नज़र है. यही कैंसर है जो नंबर 1 लिस्ट पे है जिसको हटाए जाना चाहिए. सर्विक्स क्या होता है इसका ज्ञान हमें होना चाहिए. सर्विक्स इज द माउथ ऑफ द यूट्रस, जो उसका निचला भाग जो योनि में रहता है और जिसको डॉक्टर अंदर से जांच भी करते हैं. जब आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हैं तो वो उसे देख पाते हैं. सो दिस इज सर्विक्स और इसका कैंसर एक समय नंबर 1 था इंडिया में और अब ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये नंबर 2 है. लगभग ये बराबरी पे चल रहे हैं. इन दोनों का प्रिवेंशन हो सकता है. लेकिन सर्विक्स कैंसर 1 स्टेप अहेड, उसका कैंसर बनने से पहले की अवस्था में 10 years before it becomes a cancer, तो इससे बचा जा सकता है. और पहले इसका केवल साधन ये था कि हम पैप कराएं, VIA कराएं, उसकी जांच कराएं. लेकिन अब HPV टेस्ट भी है और HPV वैक्सीन भी है. तो इतने सारे साधनों के होते हुए WHO ने ये तय किया कि ये कैंसर अगर हम इन साधनों का प्रयोग करें तो इसको अगले आने वाले कुछ वर्षों में नियंत्रण में और फिर बिल्कुल ही हटाया जा सकता है. ये है इसकी अहमियत आज की तारीख में कि WHO 17 तारीख को एक फॉर्मल लॉन्च प्रोग्राम कर रहा है जिससे दुनिया भर के देश इस कार्य को जुटेंगे किस प्रकार से महिलाओं को इस कैंसर से मुक्त कराया जाए. थैंक यू डॉक्टर नीरजा. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली कि we can detect it and we can also, we can prevent it at least 10 years before it becomes a cancer. I think it is very, very important. So next would like to ask Dr. Nirmala, ma'am, how common is cervical cancer in India and otherwise? And हमारे देश में या पूरे विश्व पे ये कितना कॉमन है ये कैंसर? Hello everyone. One thing I want everyone to understand is that if anyone gets cancer, it is registered in their country, and every cancer death is also registered. इसका मतलब है आपको कैंसर कभी हुआ तो उस कंट्री में वो रजिस्टर जरूर हो जाता है और किसी को डेथ हो गया तो वो भी रजिस्टर्ड है. तो हमें स्टैटिस्टिक्स तो बहुत अच्छा पता है. तो India has 27% of total world cervical cancer cases. But 27% cases जो है cervical cancer के पूरे दुनिया के वो इंडिया में है. And अगर 2018 के statistics देखो तो nearly करीबन 1 लाख औरत इंडिया में न्यू केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर है और 60,000 लोग मर जाते हैं सर्वाइकल कैंसर से 2018 के स्टैंडर्ड के हिसाब से. That is nearly 1 lakh women in India
have new cases of cervical cancer, and 60,000 of them die. This is the statistics of 2018. As compared to, for example, China में 1 लाख से ज्यादा नया केसेस थे 2018, लेकिन उनके डेथ थे 48,000. Okay, so to make an impact, I want to tell you, one woman in India dies every 8 minutes. एक औरत इंडिया में हर 8 मिनट, वन वुमन, एक औरत इसी से खत्म हो जाते हैं. Thank you, Dr. Nirmala. I think ये बहुत ही astounding statistics हैं. Like you said, India में mortality rate, fatality rate with the cervical cancer is much higher than other countries. I think it's a huge concern. Okay, so could you also tell us, Dr. Nirmala, ki why is it so important, the awareness? Why is it so important for women, as in जो cancer awareness हम कर रहे हैं, कैसे ज़्यादा important हो जाता है for all the women around? The main reason why it is important is it is preventable. You see, I mean, a woman doesn't need to die. She doesn't need to suffer because we can prevent it. We can now prevent it. We do not need to have the cancer at all. And total effort by the public, the public needs to understand this, that, you know, this is preventable and the step taken has to be there for prevention and preventing death. Okay. Thank you, Dr. Nirmala. Now I would like to get Dr. Saritha in. Ma'am, could you please tell us what are the major causes of cervical cancer and who is at the maximum risk? क्या कारण है cervical cancer होने के और सबसे ज़्यादा risk किस category को है? ये कैंसर सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और डॉक्टर निर्मला, डॉक्टर शेखर, डॉक्टर श्वेता और जैक्सन पाल सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि दिवाली के अगले दिन भी आपने इतने मेहनत करके ये सब ऑर्गेनाइज किया और ये और आप सब लोग जो भाग ले रहे हैं इसमें, इसका की जानकारी इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप ही हैं जो आगे जो आपकी कम्युनिटी में जाके आप ये मैसेज दे सकते हैं कि भाई ये सर्वाइकल कैंसर ये एलिमिनेट हो, मतलब ये खत्म किया जा सकता है, बिल्कुल ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ये आम कैंसर के से अलग है। आम कैंसर का हमें नहीं पता कि क्या किस कारण होते हैं, पर ये एक कैंसर है जिसका हमें कारण पता है और वो कारण है एक वायरस। जैसे वायरस मतलब अभी तो हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, मतलब इतना कोरोना वायरस के बारे में हम सुन रहे हैं और ये भी एक वायरस है। और जैसे कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन अभी संशोधन किया जा रहा है, हालांकि इस हमारे HPV जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर का कारण है, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, मतलब ऑलरेडी हमारे पास वैक्सीन है, तो हम ये ले सकते हैं। सारी जो लड़कियां ये वायरस इसका जो वैक्सीन लिया जा सकता है और ये वायरल इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्शन होने से हम बचाव कर सकते हैं और ये कैंसर ही बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो ये बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन है। Thank you, Dr. Saritha. Could you also tell us how could one lower the risk for getting cervical cancer? Yeah. तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है, बेसिकली वायरल इन्फेक्शन जो होता है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही एक दूसरे से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। तो ये इन्फेक्शन अगर ये बचाव मतलब इंटरकोर्स के जो संबंधित वायरस आप जो कांटेक्ट जो ट्रांसमिशन आप बंद करें, कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो ये जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है, मतलब 12 जो सेक्स ज़्यादा लोगों से इंटरकोर्स हो तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं जो इंटरकोर्स जब कर रहे हैं तो ये कुछ इस्तेमाल करें, जैसे बैरियर कॉन्डोम इस्तेमाल करें ताकि वो ट्रांसमिशन ना हो। और फिर भी काफ़ी सारे महिलाओं में ये इन्फेक्शन हो सकता है, मगर इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। और ये एक जो अगर वैक्सीन लेने से जो इन्फेक्शन जो होता है उसको उसी टाइम ये इसको बचाव मतलब ये इन्फेक्शन अंदर बॉडी के अंदर जाने से ये बचा सकते हैं। Thank you, Dr. Saritha. We'll move on to the next question now. Coming over here,
थोड़ा सा मैं डॉक्टर सरिता से इस बात में सहमत नहीं हूँ कि कॉन्डोम के प्रयोग से कितना फायदा होगा। कुछ फायदा शायद होगा, लेकिन बहुत हद तक इस वायरस से नहीं, और इन्फेक्शंस जो प्रिवेंट होंगी उससे शायद इस वायरस के असर में थोड़ा पड़े। लेकिन क्योंकि ये इन्फेक्शन इवन बिना इंटरकोर्स के जस्ट जो हैंडलिंग ऑफ पार्ट से भी हो सकता है, तो इसलिए ये आई डोंट want people to have a false sense of security कि अगर हमने बस ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ही पेटिंग किया, कुछ किया, इससे स्प्रेड नहीं होगा। उससे भी स्प्रेड हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रही थी कि ये इन्फेक्शंस और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये दोनों का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, और उस पे इम्पोर्टेंस जरूर देना चाहिए। Thank you, Dr. Neerja, for giving us those insights. So, like, I think the very important thing you said about menstrual hygiene. So, hygiene, I think, plays a very, very important role. और जैसे जैसे आप cervical cancer के elimination की बात कर रहे हैं, menstrual hygiene की भी उतनी ही बात की जाए, तो both go hand in hand, I believe. Moving on to the next question, I would now like to get Dr. Nirmala again. Ma'am, what are the symptoms of cervical cancer? What are the most prevalent symptoms और जो सबसे पहले visible हो जाते हैं? What are those symptoms? पहले तो that cancer होना ही नहीं चाहिए, हमें prevention के step अभी ले रहे हैं, लेकिन what is worrying is ये symptom नहीं होते हैं शुरू में no symptoms, usually no symptoms in early stages, whereas थोड़ा सा आगे निकले तो sometimes उनको आता है थोड़ा bleeding, 2 period के बीच में कभी bleeding आ गया, या bleeding when you have relation with your partner, sexual intercourse, तब bleeding हो रही है, और there is abnormal vaginal discharge, जो नीचे से पानी आ रहा है, वो क्यों जो भी ट्रीटमेंट ले ले फिर भी वो डिस्चार्ज है, स्मेलिंग है, वरिंग है. पेन इज वन थिंग विच मे और मे नॉट बी देयर. दर्द हो भी सकता है, नहीं हो सकता है. जैसे आप प्रॉपर रिलेशन रख रहे हैं तो अंदर ज्यादा दर्द हो रहा है, या कंटिन्यूअस पेन हो रहा है, back ache हो रहा है, especially back ache I am worried because you know that shows a little more of a spread also. And so some people come with unexplained weight loss. That means उनकी ना वजन किसी कारण की वजह से नहीं ऐसे ही हट रहा है, weight loss हो रहा है, या तुम्हारे शक्ल बहुत पीला जैसे ना सफेद जैसे हो रहा है, जैसे खून की कमी है, तुम्हारे नाखून सफेद हो रहा है, your nails are white and your face is white because you are losing blood from below and you have this cancer. So basically generally no symptoms, but this bleeding in between and pain during sexual intercourse, bleeding during intercourse, abnormal discharge, these are all important things. So you mean to say that ignoring any of these symptoms, any of this vaginal spotting, bleeding, backache, ignoring any of these could be really, really serious and could prove fatal also? Yeah, may not be fatal, but I think when a woman has these symptoms, they need to go to a gynecologist for a checkup. That is very important. अगर आपको ये कोई भी तकलीफ हो, आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए एक चेकअप के लिए, and then take it from there. Yeah, I believe regular routine में women just tend to ignore these things or just sweep it under the carpet. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. They should not ignore it and just see a gynecologist as and when it happens, right? Yes. Oh, thank you. Now, I would like to get Dr. Sweta in. First of all, thank you for taking this initiative and creating awareness. I would like you to elaborate on how, like this, there's a very age-old adage which says prevention is better than cure. So, could you please tell us how can women protect themselves against cervical cancer? So, there are 3 main steps to prevent. सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अवेयरनेस. जैसे आज हमने ये वर्चुअल मीटिंग करी जब कोविड फैल रहा है सब जगह, फिर भी ये इनिशिएटिव WHO की तरफ से आया और हमने ये अवेयरनेस कैंप किया. ऐसे और कैंप्स होना चाहिए. एज अ मिशन हमें ये सब
अवेयरनेस जो आज अगर हमारे पास अभी 137 लोग हैं, ये और एक एक को बताएं, ऐसे ही चेन बढ़ती जाए, तो दैट इज हाउ अवेयरनेस इज गोइंग टू स्प्रेड। एंड दूसरा चीज है वैक्सीनेशन। जो हमारी यंग गर्ल्स हैं उनको शादी से पहले ही जब वो काउंसलिंग के लिए आती हैं, चाहे वैसे भी मदर्स जो अवेयर हो रही हैं वो अपनी बहू बेटियों को वैक्सीनेशन कराएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड थर्ड स्टेप इज स्क्रीनिंग। बिना सिम्टम्स के ही जो है ये स्क्रीनिंग करना चाहिए। हमारे पास लेडीज आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्यों स्क्रीनिंग कराएं। बट तभी उनको कहा जाता है कि जो हेल्दी है उनको ही स्क्रीनिंग कराना है। इट इज मेंट टू बी फॉर हेल्दी पीपल। एंड WHO ने ये जो एलिमिनेशन का हमें गोल दिया है उसमें ये बताया है कि अगर 90% किसी देश की लड़कियां वैक्सीनेट करी जाएं, 70% की स्क्रीनिंग हो और 90% का अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होके उनको ट्रीट किया जाए, तो हम 2030 तक इस कैंसर को जड़ से हटा सकते। तो ऑल दीज 3 थिंग्स गो हैंड इन हैंड और तभी हम एलिमिनेशन की तरफ आगे बढ़ सकते। Screening, awareness and screening. One more question, Dr. Sweta, that I would like to put from my side. Like you said about awareness, do you think this kind of awareness should also be created at the level of at the level of schooling or during the education, during college days? Do you think that will be more effective? Definitely. It should be done at all the levels, and Delhi government has started a vaccination camp also for class 6 and 7 girls free of cost. So these things will actually help. And I remember going to schools and giving lectures also under the banner of Indian Menopausal Society to vaccinate and to create awareness for ladies and young girls. This is a very important step. Thank you, Dr. Sweta. Now you talked about vaccination and starting it early. So Dr. Neerja, could you please tell us who all can be vaccinated, at what age, what is the dosage, what could be the side effects? आप वैक्सीनेशन के बारे में हमें थोड़ा और जानकारी दीजिए। वैक्सीनेशन एक हमारे पास बहुत अच्छा टूल आया है, और मैं इसलिए कहती हूँ ये बहुत अच्छा टूल है बिकॉज एक तो हमारी कंट्रीज में वैक्सीनेशन की फिलॉसफी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारी जनता इसकी अहमियत समझती है, इसको एक्सेप्ट करती है, और इसका कवरेज करना हमारे लिए काफ़ी इजी है बिकॉज हमारे पास एक ऑलरेडी EPI प्रोग्राम में कोल्ड चेन के साधन पूरे गांव तक हैं। तो एक प्रॉब्लम इसमें हमारे लिए सिर्फ ये है कि हमारे पास ये अफोर्डेबल होनी चाहिए, कीमत इसकी ठीक होनी चाहिए, और इसकी पर्याप्त मात्रा में हमें मिलनी चाहिए, जो कि दोनों चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं हैं। सो इसलिए फ़िलहाल ये नेशनल प्रोग्राम में नहीं है, ये फ़िलहाल उनके लिए है जो इसको खरीद के लगवा पाएँ, और इसलिए मोस्टली शहरों में ही है। लेकिन जैसे डॉक्टर शेखर अग्रवाल ने बताया, उनकी संस्था, कई संस्थाएं भी ऐसी हैं जो कर रही हैं ये काम टाइम टू टाइम। कई सरकारें हैं जैसे सिक्किम की हुई या पंजाब की हुई जो कोशिश कर रहे हैं अपने फंड से करने की, और अगले साल तक हमें उम्मीद है कि एक इंडियन वैक्सीन आने से इंडिया में भी ये होगा। अब किसको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं? ये लाइसेंस तो काफ़ी ब्रॉड है, यानी कि 9 साल की लड़कियों से लेके 45 साल की लेडीज तक के लिए है। 26 साल का ओरिजिनल लाइसेंस था जो जब ये US में आई थी, लेकिन इंडिया में ये शुरुआत से ही 45 साल तक लाइसेंस्ड है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारी एजेस इक्वली गुड हैं। बेस्ट एज जो है वो है यंगर एज। कोई भी वैक्सीन का असर बेस्ट तब होता है जब वो यंग होती हैं लड़कियां। तो 15 साल से पहले लगाने में एक बहुत फायदा ये है कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, टाइटर्स इतने हाई होते हैं कि उसमें सिर्फ 2 डोजेस ही काफ़ी हैं। सो इट्स अ बिग कॉस्ट सेविंग ऑल्सो, एज वेल एज एक इंजेक्शन कम लगना, दोनों ही बातें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं लगाने वाले को। तो कोशिश ये होनी चाहिए, और आजकल भी पैंडेमिक के चलते भी कोशिश ये होनी चाहिए, जो लड़की का 15th बर्थडे आ रहा है उसका पहला वैक्सीन शॉट लग जाए। दूसरा वैक्सीन शॉट 6 महीने के बाद लगे, साल, 2 साल, 5 साल तक भी लग सकता है, लेकिन पहला शॉट अभी लगाना बहुत बेहद ज़रूरी है। वैसे लगाने को हम किसी भी एज में लगाएं, लेकिन जब लेटर एज में लगाएं तो उसकी एफिकेसी प्रोपोर्शनेटली कम होगी,
और इन एनी केस सभी को स्क्रीनिंग करवानी ही है। ये ना सोचें कि वैक्सीन लगाऊं या स्क्रीनिंग चॉइस है, नो, चॉइस नहीं है, दोनों ही चाहिए। एंड कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वैक्सीन के? हार्डली एनी। जहाँ तक हमने देखा है मोस्टली जिस तरह से आपका टेटनस टॉक्सॉइड लगवाया होगा सबने, टीटी का इंजेक्शन प्रेगनेंसी में भी सब लगवाते हैं, बचपन से लेके लगता आता है, तो थोड़ा पेन इंजेक्शन की साइड पे, क्योंकि ये बाजू में लगती है तो थोड़ा पेन, किसी किसी को हल्का फीवर या कुछ थोड़ी सी दुखन होना, या थोड़ी लालिमा आना जहाँ इंजेक्शन के साइड पे। वैसे हम लोग के स्किन इतने फेयर नहीं है तो लालिमा कम ही दिखती है। तो इस प्रकार से थोड़े से रिएक्शंस मोस्टली हैं। सीरियस इफेक्ट रिएक्शंस बताए गए हैं इसलिए कि क्योंकि कुछ भी जो होगा उस इंजेक्शन के बाद उसका सोचा जाएगा क्या ये इंजेक्शन के कारण है, चाहे किसी को चोट लग जाए, चाहे किसी को किसी और कारण से बीमारी कोई भी आए। तो अगर हम ये देखें कि क्या वो वैक्सीन के कारण थे, तो नहीं, ऐसे कोई सीरियस इफेक्ट्स नहीं मिले हैं जो वैक्सीन के कारण माने गए हों। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स बाद में आई हैं वो उतनी ही होती हैं उनमें जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। तो सीडीसी वाले कहते हैं कि ये टीटी के जितना ही सेफ इंजेक्शन है, इसमें कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। Okay, ma'am, one more question that I would like to ask from my side. I am now 41 years old and married for 16 years now. And I think there's also somebody in audience who's asking, somebody has turned 46. Do you think abhi iski kuch efficacy hai ya sirf screening par hi rely karna chahiye? So the thing is that the license depends upon the data presented to the licensing authority. So if the company has done tests up to age of 45, they can only certify that. कुछ इसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि दवाइयों की एक्सपायरी डेट लिखी होती है, बट वो ऐसे तो नहीं है कि उस डेट के बाद सडनली वो कामयाब नहीं होती हैं. सो इट इज समथिंग लाइक दैट, बट इट इज व्हाट एविडेंस वी हैव कि कब तक ये चलता है. दूसरी बात देखने वाली ये होती है कि ये जैसे हमने बताया कि ये कैंसर बनने से 15 साल पहले, 10, 15, 20 साल पहले इसके असर शुरू हो जाते हैं. तो अब जो इन्फेक्शन होगा 45 साल पे, वो कब मैनिफेस्ट होगा एज कैंसर, ये भी चीज देखने वाली है इस कैंसर के लिए. इसलिए नॉर्मली हम 45 साल के बाद तो इन एनी केस, बिकॉज इट इज नॉट लाइसेंस्ड, नो डॉक्टर विल रेकमेंड इट, बिकॉज इफ देयर इज एनी कॉम्प्लिकेशन it is not legally tenable. But what is more important is कि वो स्क्रीनिंग कराएं, अपना HPV टेस्ट कराएं, बेस्ट है, और 5-5 साल के इंटरवल पे करा लें 2-3 बार, तो पता चल जाएगा कि उनका रिस्क ना के बराबर है. All right, thank you. And there is a request from the audience that if you could also repeat a few important things in English and Hindi both, that will benefit the larger audience. Okay, moving on to our next question now, I would like to get Dr. Saritha in again. Ma'am, what are the kind of screening tests that are available for cervical cancer? Cervical cancer को पकड़ने के लिए क्या-क्या screening test available हैं? इसके बारे में थोड़ा आप हमें जानकारी दीजिए. Yeah, so there are the different types of screening tests for cervical cancer. So because we know since now that it's actually an HPV infection, so the test, there are tests to detect the HPV infection, जैसे HPV test जो मतलब जो वायरस डिटेक्ट करता है वो HPV टेस्ट कहा जा सकता है. तो ये टेस्ट, हालांकि ये सबसे रीसेंट टेस्ट है, बट सबसे पुराना जो टेस्ट हमें पता है जो पैप टेस्ट, जो पैप स्मीयर जो बोलते हैं, तो बेसिकली दिस पैप स्मीयर इज टेकिंग अ फ्यू सेल्स फ्रॉम द सर्विक्स, जो बच्चेदानी के मुंह का है, उसमें से कुछ सेल्स हम एक ब्रश से लेते हैं और वो लैब भेजते हैं फॉर टेस्टिंग. एंड एक और टेस्ट है दैट इज VI, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, जिसमें हम एसिटिक एसिड लगाते हैं, मतलब सिरका, जो आपका घर में जो आप सिरका यूज करते हैं वो डाइल्यूट होता है, और उसको लगा के बच्चेदानी के मुंह पे हम देखते हैं कि कुछ व्हाइट धब्बे हैं क्या. अगर व्हाइट धब्बे है इसका मतलब कैंसर के पहले वाला स्टेज है. तो ये दो टेस्ट जो है पैप स्मीयर और VI, जो विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, ये ऑलरेडी इन्फेक्शन जो HPV इन्फेक्शन है कुछ साल तक
अगर रहा तो उसको जो एपिथेलियम होता है, जो सर्विक्स का जो लाइनिंग होता है, उसमें बदलाव होते हैं जो ये पैप स्मीयर और VIA टेस्ट में देखे जाते हैं। और ये जो HPV टेस्ट जो है, जो HPV जो इन्फेक्शन जो पता करता है, दैट इज द HPV टेस्ट। और ये भी इसी का टाइप का, मतलब जो ब्रश जो दिखाए गए हैं उस टाइप का ब्रश आप सर्विक्स में डालते हैं और ये टेस्ट ये लैब भेजा जाता है। तो बेसिकली ये ब्लड टेस्ट नहीं है, जो भी टेस्ट है ये बच्चेदानी का मुंह को चेक करते हैं, या तो कुछ सेल्स ब्रश से कुछ सेल्स निकाल कर या फिर उसके पे कुछ लगाकर चेक किया जाता है। तो दोनों मतलब जो सारे जो टेस्ट हैं उससे हमें पता लगता है कि कुछ बदलाव आए हैं क्या जो सर्विक्स में, कि वो प्री कैंसरस स्टेज है वो अगर है वो, तो ये इन टेस्ट से हमें पता चलता है। Okay, so this is a clinical test, cannot be done with any home test kit or something. हाँ, ये okay. Now the HPV test is the जो सैंपल है HPV का वो खुद महिला अपने घर में भी ले, होम मतलब सेल्फ टेस्टिंग भी हो सकती है। जैसे हाँ, जो ब्रश खुद अपने महिला अपने जहाँ पे वो मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलता है वजाइना में डाल के और वो सैंपल निकाल के लैब में दे सकती हैं। और इससे भी रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो या तो ये डॉक्टर सैंपल निकाले या पेशेंट निकाले, वो देखा गया है काफी स्टडीज में कि वो ठीक रहता है, मतलब इसका रिपोर्ट। और ये इसमें कुछ चेंज मतलब जो एक्यूरेसी सेम whether it is taken by the patient or the physician or the doctor. Thank you, Dr. Saritha. Now, I would like to get Dr. Sweta in. Ma'am, is there anything that you would like to add to this? Do you think these are these जो सबसे बड़ी contention रहती है, are these tests painful? How are they actually done? Is the procedure painful? Ma'am, please unmute yourself. Yeah. जैसे डॉक्टर सरिता ने बताया, it is like any gynae checkup in the gynae clinic. जैसे हम एग्जामिन करते हैं जब हमारे पास पेशेंट आती है, उतना ही ये पेनफुल है. बेसिकली आई वुड नॉट कॉल इट पेनफुल, इट्स अ लिटिल डिस्कम्फर्ट एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जो लेडीज ने गायनी चेकअप कराया होगा, इट इज एग्जैक्टली द सेम, इट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट. Okay, and are these tests done at all the local dispensaries and government hospitals everywhere across India? ये टेस्ट मतलब हर जगह तो नहीं होता है. इनके लिए क्या कहते हैं, एक लैब की फैसिलिटीज होनी चाहिए. बट यस, इट इज वाइडली अवेलेबल एंड बहुत सारे लैब्स हैं थ्रू आउट जो कर रहे हैं. बट इन केस ये टेस्ट अगर HPV या LBC नहीं भी अवेलेबल है, तो जैसे डॉक्टर सरिता ने बताया, एक वेनिगर टेस्ट होता है जो कि हर पेरिफेरी, PHC, विलेजेस, हर जगह अवेलेबल है. चाहिए तो बस विलिंगनेस फ्रॉम द विमेन साइड टू गो एंड गेट दिस डन एंड अवेयरनेस. जो VI जो टेस्ट बताया जो एसिटिक एसिड से, that can be done anywhere actually, because we have done in camps also. So we just in camps where there is basically you need an examination room and जो instruments for examination. तो ये और एक अच्छे सा लाइट चाहिए और वो स्वॉब स्टिक्स चाहिए. तो ऐसे कोई बड़ा सा हॉस्पिटल नहीं चाहिए इसके लिए, छोटे से क्लिनिक्स है या डिस्पेंसरीज में भी ये किया जा सकता है. और इवन पैप स्मीयर फॉर दैट मैटर, पैप स्मीयर लेने के लिए भी काफी ऐसे कुछ बहुत ज्यादा इक्विपमेंट हमें नहीं चाहिए होता है. So you mean to say such a serious ailment can be detected using very less resources. Exactly. And it can be done easily. I mean, if the women are willing to go and get themselves screened, right? Yes. And screening don't require doctors also. They are NMMs and nurses who are trained for this, and they can do, and when they find any doubt, they can show it to the doctor, and then if their test is positive, they can come for a colposcopy, which will come later. And in fact, actually a lot of women have this
feel that that discomfort because of that instrument, the speculum that we put in. So that can be avoided if they can take the sample on their own. जैसे मैंने बताया HPV test, उसका जो brush अपने खुद अपने vagina में डालें और sample दे सकते हैं, तो उससे न पेन होगा और न हॉस्पिटल जाने का डर होगा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो अपना जो ब्रश से लेके और बॉटल में डाले और लैब में दे दे sample. Okay, thank you, Dr. Sweta, Dr. Saritha. Now I move on to Dr. Neerja again. Ma'am, could you please elaborate who can take these tests and how frequently are these tests done? Like Dr. Sweta said earlier, even if you do not have a symptom, you can still get the test done. You should not wait for any symptom to arise. So, अगर आप बता सके कि कौन ये टेस्ट किसको लेना चाहिए और कितनी frequently इस टेस्ट को लेना चाहिए? Yes, so while others have been answering, I have been busy typing out answers to all the questions in the chat, and please look at them who had typed the questions should find their answers. Then some of the questions were a bit ambiguous. Someone said, who are the participants? So I don't know if it meant the participants in screening or vaccination or which way. So, and then there was someone who was objecting that there wasn't enough English in the dialogue. So yes, we are trying to tell you in English also. And if there's anything specific that's in your mind, please ask the question again. So who can take the test? I think this is, does that mean who is the patient? Yes, ma'am. At what age? At what age bracket? Yeah. So, abroad, they start quite early to take the test. But in India, we have seen that it's very few women who have the cancers before they are 30 years old. So the general recommendation is after 30, and WHO's recommendation is if you are doing HPV test, 35 and 45. यानी 30 साल की उम्र हो जाए तो जरूर आपको ये टेस्ट करवा लेना चाहिए एक बार, और उसके बाद 5-5 साल पे होना चाहिए टेस्ट. So if you are doing a pap smear, the frequency is more, it's 3 yearly. If you're doing the HPV test, it's supposed to be 5 yearly. But if you are doing an HPV test at the minimum twice in your lifetime, then that is also a good option. Ma'am, when you say one should definitely get tested at age 30, do you mean 30 as an age, or if you are a virgin at the age of 30, or if you've had multiple sexual partners at the age of 30, do you think that makes a difference? So virgin at the age of 30, no, we would not recommend anybody who's seriously a virgin to go and get these tests done, no. Because the concept is that it's absolutely unlikely. It's not that it's never reported, but it's unlikely that they would have this infection. And multiple sexual partners doesn't change our screening recommendations. I don't think so. And also we must remember, and this is also a part of what Dr. Saritha had said in the beginning. I was thinking at that time, one more point I want to make, that it is not only how many partners the lady has, but also how many partners the man himself has. The partners of the spouse, and in many countries like ours, where still the social behaviors are different between the genders, same has been reported from South America, that sometimes the woman may not have multiple partners, but because the man has, and we have even had a sort of a term in the past called a high-risk male for those men who are in very traveling kind of jobs, posted away from home and all that. So we do recognize that these are aspects of social, normal human behavior, and we have to deal with that. So it should not be that it is a stigmatizing thing that because this woman has this infection, she has multiple partners. No, it's not necessary. And the man has multiple partners is also not necessary, because it's a very, very common infection that they will get. So multiple partners, and usually at least 3 years should pass after sexual activity before they have the problem. So I would say that definitely they should get into getting regular checkups done. And anybody who is over the age of 25 can consider getting the screening done. And especially if they have symptoms, they should get themselves checked up. Okay, so those are some important points. And on a lighter note, fidelity can also play a part in preventing this cancer then. Yes.
Okay, so now moving on to Dr. Sweta again. Now we have talked enough about tests and symptoms. So suppose I've taken the test and if my test report is positive, now what next for me? What is the line of treatment and what next? So, depending upon the test, suppose we do a test and it comes out to be positive, it is not necessary कि हमें कुछ intervention करना ही है. Sometimes if the report is very mildly positive, we can just observe, or we can do an additional test to sort of endorse our finding. Or if it is at a high grade kind of a problem, then we can do a colposcopy, which is like a दूरबीन, जो दूरबीन से हम बच्चेदानी का मुंह देखते हैं, और अगर हमें कोई डाउटफुल चीज दिखती है वहां पे तो हम से बायोप्सी ले लेते हैं. एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज कि वो बायोप्सी में जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है. तो इट ऑल डिपेंड्स कि रिपोर्ट में क्या आया है. रिपोर्ट बस ये बताती है कि इस लेडी को थोड़ा ज्यादा चांस है ये प्रॉब्लम होने का इन फ्यूचर, या फिर बिल्कुल चांस नहीं है, या इसको हमें कुछ बायोप्सी लेके और टेस्ट करना ही है. और अगर ये टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? केमोथेरेपी क्या, व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? सी अभी तो कीमोथेरेपी एंड ये सब तो लेट स्टेज की बातें हैं, व्हेन वी नो कि हाँ भाई कैंसर है ही. क्योंकि जैसे डॉक्टर नीरजा ने बताया कि ये बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है, इट टेक्स अबाउट 10 to 15 years. तो हम सब जो यहाँ पर आज पैनल डिस्कशन कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं कि हम अर्ली स्टेज पे ये डिटेक्ट करें. तो वो कैंसर होने के 10 साल पहले तक प्री कैंसर लीजन, जिसको CIN कहते हैं, वो होता है, और उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है. एक कॉटरी से जला देते हैं या कुछ थोड़ा सा सिकाई कर देते हैं, उसी से ही ठीक हो जाता है. तो द होल एम इज नॉट टू रीच कैंसर एंड सिकाई एंड कीमोथेरेपी एंड सर्जरी वाला स्टेज. Okay, I think that's a very important observation कि पहले ही प्री कैंसर ईयर्स में इसको रोक लिया जाए, then we might not need all those serious intervention and incisive therapies. Now I'll move on to some more questions, that we frequently get to hear from anybody who's concerned about cervical cancer. Like somebody says, I've been vaccinated for cervical cancer before my marriage, and right now I have no symptoms. Do I still need to undergo this test? But I think Dr. Neerja has already told us the screening, vaccination does not mean that you need not have screening. Dr. Neerja, could you please take that question? So the test has to be done because there are many types of HPV virus. The vaccine is good for only 2 of them. So there is still a possibility that you may get the problem from one of the other types which are not in the vaccine. Okay. So next, from a mother's point of view, somebody says, my daughter is 13 years old or is a teenager, and she took her first vaccination in February, like pre-lockdown. And now due to pandemic, she could not take her second shot. What should one do in such a situation? So, she has already taken first dose. Ideally, it should be 6 months later, that is in August. But if she has not taken, there is no harm. There is not necessary कि वो दोबारा से वो पूरा course शुरू करे. She can just go on feasible time, whatever is convenient to her, take a second shot, and the antibody response will be equally good. In fact, 6 months से कम का gap नहीं होना चाहिए. बट 6 मंथ से ज्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. शेड्यूल को रिपीट करने की जरूरत नहीं है. तो अगर हम ओवरशूट भी कर जाएं फॉर द टाइम फॉर द सेकंड डोजेज, इट्स स्टिल ओके. वन कैन गो एंड हैव इट, टेक इट एट द ओके. And ma'am, we have a few questions from our audience also. Dr. Sweta, would you like to take up a few questions from the audience? Yeah. So before I go on to the questions, I would really thank the M2K Victoria Garden Society, who have actually supported us, and the Civil Lines RWA, who have actually joined in good numbers, and they are writing to us whether we can have this screening camp and vaccination camp. Definitely we can have a vaccination camp, but in a hospital setting, so that we have all the things ready for in case there is any emergency.
So that is very important to have all the facilities available in case there are emergencies. Most of the questions which I can see in the chat box are already answered, but there is one question: will the vaccine be available in the government setup in near future? Dr. Neerja, would you like to answer this question? Yes, we are definitely hopeful that it will be. You know, we have to, as I said, look at the fact of the expense to the exchequer. So we are very hopeful that now we have an Indian vaccine which is in trials. It's in phase 3 trials, and we are hopeful that by next year we will have the trial data, and we will be able to have this vaccine, which will be definitely more affordable, and then we can have it out in the national program. There is another very interesting question from. 1 minute, add one more thing. Yeah, you know, sure. Many people have said that it's a very expensive vaccine and all, and many people have said that maybe parents should consider putting this into the marriage budget. And we have even considered whether we should go to the, the Trousseau shops and strike a deal with them to throw in 2 doses of or 3 doses, and the girl by then is of course not the 2-dose age. So if they are spending thousands and thousands of rupees just to spend another 5,000-6,000 rupees on the vaccine, and now that we are saying that you can prolong the interval, it allows them to save up for the second dose also. So I think there are various ways in which we can, if we really want to do it, there are many people who can do it. Dr. Neerja, I am into the business of trousseau clothing. I think you have given me a very good idea. You can sponsor 2 doses. Absolutely. And I think that should be done. Get free. They should buy maybe one clothing item less and get themselves vaccinated. I think that will be more important. Yeah. Yes, absolutely. So a very interesting question has come from Dr. Sweta Agarwal. One question, she has actually asked 2 questions. One is, ladies unmarried also get cervical cancer, which Dr. Neerja has very rightly said that if they are actually truly virgin, they need not. And the second question, does the virus remains only in semen? Dr. Saritha, would you like to take up this question? Yes, well, mainly the transmission has been, has been found through the semen, and but the contact can be, it need not be exactly as Dr. Neerja said. It need not be, through penetration, can be a surface transmission also. So in fact, that was the cause, earlier many years. Of research has shown that earlier it was seen that the ladies who were nuns did not have the vaccine, the cervical cancer. So this was actually thought to be because of that was how it was found to be is related to sexual transmission. Yes, and there are communities where there are a lot of circumcision has been going on, and they are found they say that it is actually less, but then there are not it's not just the semen, but there are other factors. The transmission, of course, is through it's sexually transmitted, but it could be the transmission may not be just a vaginal transmission. It could be through oral transmission also. Okay. Okay. I would just want to add at this point is ki in some countries the boys are the vaccine is recommended for vaccination of boys also. Dr. Yes, Neerja, in fact, in Australia, it is they are vaccinating the boys also, not just the girls. Okay, so before we conclude, I think I would like to invite all the panelists to sum up and to give us some takeaway, like in brief, what all we have had a very, very fruitful session here. I think it has created a lot of awareness, and we really hope that more such awareness camps, both online and offline, are held also at the level of schools and at the level of middle education. Like you said, at the age of 14 years, it is very, very effective to get a vaccination shot. So I think it would be very useful if government would take more initiative and organize these camps, awareness camps in school. So I would start with Dr. Nirmala, ma'am. What is the one thing that you would like to tell us, like a brief takeaway?
my brief takeaway message is कि आप लोग सब ये जो knowledge है ये लेके take action. Vaccination के लिए आज या कल जाओ. Don't wait for day after tomorrow. And यही message अपने friends को spread करना है, अपने family में spread करना है. This is my message. Dr. Saritha. हाँ, ये मैं सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये मत सोचिए कि ये कैंसर हमें नहीं हो सकता है. कैंसर किसी को भी हो सकता है. HPV इन्फेक्शन जो है किसी को भी हो सकता है. And a lot of women actually, as we said, clear the infection on their own. But ये मतलब इसका यही बचाव है कि अगर टीकाकरण करा सकते हैं तो कराइए, वैक्सीनेशन ले सकते हैं तो लीजिए, या तो एटलीस्ट अपना चेकअप तो कराइए, स्क्रीनिंग तो कराइए. ये तो आप कर सकते हैं. मतलब इसके लिए आपको इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं है. आप खुद साल में सिर्फ 2 मतलब 10 साल में एक बार टेस्ट कर सकते हैं. HPV का जो टेस्ट है 10 साल में एक बार किया जा सकता है और उसी से ही आपका बचाव हो सकता है सर्वाइकल कैंसर से. तो ये टेस्ट करना और इसके इलाज भी है जो बहुत ही आसान है. सिंपल तरीके से इसका इलाज हो सकता है, क्योंकि जब कैंसर बन जाता है उसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, कि स्पेशली क्योंकि ये कैंसर जो डिटेक्ट होता है बहुत एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है. तो उसका जब आप तभी जाएंगे हॉस्पिटल जब आपको ब्लीडिंग हो, तब आपका पानी जा रहा हो, तो वो मतलब ये स्टेज जो है काफी आगे बढ़ चुका है और उसका इलाज मुश्किल है. और इलाज हो अगर स्टेज 3 एंड 4 जो हम देखते हैं, महिलाएं जो आते हैं हमारे हॉस्पिटल में OPDs में, जो स्टेज 3 एंड 4 जबकि जिसमें इलाज मतलब एटलीस्ट 30 to 50% का इलाज हो सकता है और इलाज भी मुश्किल है. मतलब रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी है, तो इसमें साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा है. तो इसीलिए जो इलाज जो इसके तरीके हैं कैंसर से बचने के लिए, इसके काफी सिंपल तरीके बताए गए हैं. वैक्सीनेशन है, स्क्रीनिंग है. तो ये हमें मतलब इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये हम खुद अपने लिए कर सकते हैं. इतने मतलब 10 साल में एक बार जाके हम चेकअप करा सकते हैं. उसमें कुछ आपका कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है. और HPV जो टेस्ट मैं बता रही हूँ वो खुद भी टेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं है. Dr. Neerja. कई लोग ऐसे कहते हैं कि if I have cancer, I don't want to know it. और कई लोग ऐसे होते हैं जो कैंसर वर्ड भी नहीं यूज करेंगे. Do I have the big C? ऐसे पूछेंगे. वो सोचते हैं कि वर्ड बोलने से ही कुछ हो जाएगा. बट ये कैंसर ऐसा है कि आई से कि इफ यू हैव दिस और एनी कैंसर, यू वांट टू नो अर्ली, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट ही राज है. उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बनी रहेगी, उससे आपकी क्वांटिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ भी बना रहेगा. और जो ये वैक्सीन हम लगाते हैं, इसके कई लाभ ये भी हैं कि ना केवल ये कैंसर से बचाएगा, कैंसर से पूर्व की स्थिति से भी बचाएगा, CIN से भी बचाएगा. क्योंकि यदि आपको CIN भी हो जाता है फिर आप उसका ट्रीटमेंट कराएंगे. यदि आपके अभी बच्चे नहीं हुए हैं फिर आपको चिंता होगी इसका उस पर इफेक्ट तो नहीं आएगा. कई तरीकों की आपको प्रॉब्लम्स होंगी, मानसिक तनाव होगा. ये सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए वैक्सीनेशन इज अ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन विच एवरीबडी शुड अडॉप्ट, जिसके पास वो फैसिलिटी हो. हाँ, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके कस्बे में नहीं मिल रहा है, आपको कोई समस्याएं हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट इफ यू हैव एक्सेस, please accept that is the best thing to do, followed by screening. और ये दिखाया गया भली भांति सब मॉडलिंग स्ट्रेटजीज में कि सबसे कामयाब तरीका यही है कि you take the vaccination before 15 years of age and then you get screening done by the time you are about 35 years old. That is your best solution for preventing this cancer. But don't forget to check the breast also, because that is also a problem. So do both the things and you will be in a very, very good situation. Thank you, Dr. Neerja. Over to Dr. Sweta now. Ma'am, what is your last takeaway message for us? Ma'am, please unmute yourself.
Somebody has muted me. Yeah. Yeah. Stitch in time saves 9, as everybody says. But ये जो awareness programs हम करते हैं, every time this is post Diwali, I purposely kept at this time that everybody will be free. And Jackson Pal has actually sent message to 26,000, and I have called at least 500 people, and still when you see just 168 people joining, it is really very sad, and you feel bad when I was thinking at least 500-600 people will join. So stitch in time saves 9, and this awareness is going to go a long way. So those who have attended, please share it with other people. This will be on the YouTube also. So please watch this video. I think it has everything about cervical. Thank you, Dr. Sweta. And before we close the session, I would like to summarize that the 3 steps to complete elimination of cervical cancer are awareness, vaccination, and screening. These are the 3 things that can take us to complete elimination of cervical cancer by 2030, as most of you have said. And I would also like to thank the technical team, Mr. Amit, and also Dr. Vipin and Dr. Deepika. And over to Jackson Pal now for the closing note. Just one question I want to ask. Dr. Neerja, I want you to please answer this question, which is in the chat box, that are these sticks same for self-sampling, or there are different sticks which are available for self-sampling? There's a question which is asked, where can we get those swabs? You know, the ones we have actually are just the normal HPV kits which are meant for the physician, and there's actually no reason why the patient can't use them. And we have done studies also where patients have used them. The only problem is that since they are scored to break off, they could break off while the patient is doing it. Also, sometimes patients may worry that they look like a brush. So there are some more fancy looking ones which have been devised abroad, but those are not yet available in India as far as I know. So people can get it online, isn't it? I am not sure. I don't know if Dr. Saritha or anybody knows better. But I think as of now, if you have a problem and you would like to, you can just take the same kit and use it. Ma'am, I'm getting one more question that I would like to take. I would not let this opportunity go. Somebody is asking, is the girl getting vaccination should necessarily have started her periods? So that is not necessary. Dr. Nirmala is answering that, I think. And please unmute yourself, Dr. Nirmala. No, basically, we are talking about early vaccination. Young girls should get vaccinated after age of 9 to up to 15, because the vaccination is most effective in that age group. It has nothing to do with whether she is menstruating, and this applies for boys also. If boys want to get vaccinated, get it in the young age of 9 to 15. So no relation to period. Period कुछ भी हो, आप उस उम्र में ले सकते हैं. Thank you. Any more questions from anybody? There's one question about vaccination up to 50 years. I mean, as Dr. Neerja has already said, it's only licensed up to 45 years. So it's not really effective if taken after 45. Okay. Dr. Sweta, do we have any more questions, or can we just conclude now? I would really like to thank Madam Dr. Neerja and Dr. Saritha to join in. It's a real honor to have you here. And basically, I live in this society, and Gitika and me, we have been talking to each other about this. And you have really this is a first step towards this prevention. Thank you very much. I have one comment, and that is, let us all join together for a cup of tea. When is Deepika going to organize the chai? Sure, We would love to. We would love to. Let's get over with this COVID thing. Let's all get together. But I'm happy to see so many questions in the chat box, because in the past, I often observed that people were hesitant to ask questions from the speakers. And really, the chai was a very good time in which people would come and talk to you one-on-one.
So it's really nice that people are posting the questions in the chat box and making it interactive, which is very, very nice for us also to see that interactive audience. And ma'am, all of you doctors, please ask everybody in audience to please wear their masks properly. Of course, not like we are sitting now. Our No, society not has like become a hotspot. Yes. Hotspot. It's It has become a become. hotspot. Yeah, mask and social distancing and not face to face. Even if you are sitting and having your tea, you should be 6 feet apart and facing in the same direction, not facing each other. So that is very, very important. First of all, you try not to eat and drink together. Take off the masks one by one if you have to be in the same room, and keep distancing and keep the ventilation going. Make sure there are 6 exchanges of the room air. Previously, they were closed with ACs. Now they will be closed with heaters. So we have to make sure that there is a circulation of the air. That is very important. And of course, the sanitizing every 20 minutes. Hands. Thank you. Thank you. That was a useful closing note. Thanks a lot. Well, on behalf of Jackson Pal, I'd like to take this opportunity to thank all of you. Jackson Pal, the makers of cancer preventive Lycored soft gel. We also have antibiotic Doxipal DRL and cramp off tablets for relief from leg cramps. So I'm Dr. Deepika, and along with me and my teammates, Dr. Vipin Tyagi and Mr. Amit Saxena, we are all thanking all the experts for sharing such vast knowledge with all of us today. And we like to reassure all the experts our extended support to your future activities also. Do remember us. We appreciate the presence of all the attendees also. Hope this goes a long way in knowledge sharing. Thank you very much, and we hope to see you again in our next webinar. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, Thank you. Shweta and Jackson Pal and Ms. Deepika Thank you. for conducting this session. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Take care. Bye, bye. Keep yourself safe. Everybody, please get vaccinated. Please get screened. Please create more awareness. Keep yourself safe. Thank you.